Hello everyone, this is Siachen Glacier coming up in next session of current affairs. तो अब के सेशन में हम थोड़ा सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशन के न्यूज़ से थोड़ा डील करते हैं. And in this news, let's talk about security. Now it says कि since February, like there is all quiet on LoC. Like LoC पे इतना ज़्यादा firing, cross firing नहीं देखी गई है. And this news talked about कि there is no exchange of fire on the LoC, and in fact both countries are committed to 2003 ceasefire. And smuggling जो होती है इसमें like this has been like but smuggling अभी भी देखी गई है कि ये यहाँ पे जो टनल्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है ड्रग्स और आर्म्स वगैरह को स्मगल करने के लिए. दैट इज कॉन्टिन्यूइंग बट सीज फायर इज बिंग मेंटेन इन टर्म्स ऑफ कि क्रॉस फायर नहीं देखी गई है. लाइक नॉट टू अंडरस्टैंड इन डिटेल कि 2003 का सीज फायर है क्या और LoC क्या है उसको समझेंगे, बिकॉज LoC विल कम इन न्यूज अगेन एंड अगेन एंड वी सी कि देयर हैज बीन कॉन्टिन्यूअस सीज फायर वायलेशन ऑन बोथ साइड. पाकिस्तान भी और इंडिया भी दोनों तरफ से सीज फायर वायलेशन होते रहते हैं. नाउ लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज LoC. LoC emerged in 1948. Like it was like in 1948 हमारा LoC आया. It was negotiated by UN after the Kashmir War. Now to understand in context what happened was in 1947 when India and Pakistan was divided, many of the state decided to came many of the princely state. तो जो ब्रिटिश इंडिया की जो ब्रिटिश की डायरेक्ट कंट्रोल में थी वो तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिवाइड कर दी गई थी या फिर लाइक उनके बीच में वहाँ इलेक्शन हुआ और डिसाइड हो गया था. बट प्रिंसली स्टेट ने अभी तक डिसाइड नहीं किया गया था. एंड फॉर प्रिंसली स्टेट लाइक परसुएशन either persuasion और डायरेक्ट एक्शन वाज यूज्ड एज एन अप्रोच कि उनको इंडिया पाकिस्तान में इंगेज कर दिया जाए. एंड यूजुअली रिलीजन बिकेम द बेसिस कि जहाँ पे मेजॉरिटी हिंदू थे वो यूजुअली इंडिया की तरफ आते चले गए. बट कश्मीर वाज अ मुस्लिम डोमिनेटेड एक पूरा स्टेट था. एंड एट दैट टाइम द महाराजा ऑफ द कश्मीर डिसाइडेड कि उन्हें इंडिपेंडेंट रहना है. ना उन्हें नीदर ही वांटेड टू बी पार्ट ऑफ इंडिया नॉट ही वांटेड टू बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान. And he wanted to stay independent at that time. But what happened? Pakistani, there was some tribal, it is said it was tribal incursion, but we cannot completely be sure, it was a tribal incursion. A tribal incursion was seen on part of Pakistan. And already Maharaja has said one thing, that if it sees violation of it sees violence from any of the side, then it will go to the other side. अगर पाकिस्तान वायलेंस करेगा तो इंडिया की साइड ले लेगा और अगर इंडिया वायलेंस करेगा तो पाकिस्तान की साइड ले लेगा, जिससे इंसेंटिव हो गया कि दोनों ही साइड वायलेंस नहीं लेना चाहती थी. बट देन पाकिस्तान इंस्टेड ऑफ एक्टिंग एक्शन डायरेक्ट वायलेंस इट यूज द लोकल पीपल एंड लोकल पीपल स्टार्टेड इन्वेडिंग इन कश्मीर. And it was said as कि tribal brothers are actually trying to protect the Kashmiri people, but lot of violence, rape and massacre was seen in the entire area. After which महाराजा हरी सिंह जो वहाँ के महाराजा थे, he decided to sign an agreement with India. इंडिया के साथ एग्रीमेंट साइन किया और कश्मीर को इंडिया का हिस्सा बनाने के लिए मान दिया गया. But till then कश्मीर पाकिस्तान Pakistani people has come till here. Okay. And then at that time महाराज सरदार पटेल said कि let's take military action और इस पार्ट को भी अपने कश्मीर में इंक्लूड कर लेते हैं. बट आवर प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम नेहरू didn't want a nation to go through a war, and then he had some kind of faith in the United Nations, so it said no, let's take the matter to the UN and UN itself will decide कि plebiscite वगैरह होता है तो कश्मीरी people will decide कि वो कौन सी साइड लेना चाहते हैं. But what happened at that time was UN at that time उसने इस बाउंड्री को ही वहीं पे छोड़ दिया और मैटर तब से यूएन में लटका रहा और हमारी साइड नहीं ली गई. Ever since then, this part is actually it's called Pakistan occupied Kashmir. कि पाकिस्तानी people have this part of Kashmir. Now in 1972 इसको लीगल रिकॉग्निशन मिल गई थी, बिकॉज इन 1972 जो इंडिया पाकिस्तान जो वॉर हुई थी उसमें India actually came out victorious, and at that time India said कि let's recognize LoC as an international boundary और दोनों कंट्री ने से रिकॉग्नाइज कर लिया गया. But then what happened? India saw even various war after that. That include 1990s की जो आपकी कारगिल वॉर थी. कारगिल वॉर फिर देखी गई. So in Kargil War, after Kargil War and serious negotiation after which जिसमें हमारे मनमोहन सिंह और बाकी उस साइड से भी उनके प्राइम मिनिस्टर इंगेज थे.
एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया गया कि बोथ कंट्रीज, क्योंकि कॉन्टिनेंट्स इधर से गोलियां चलती थी, उधर से बॉर्डर के अक्रॉस गोलियां चलती रहती थी, एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया जिसके बाद दोज कंट्रीज वर नॉट सपोज टू फायर एट ईच अदर. Now this agreement was actually fulfilled by both countries for many years, like at least 2 years यहाँ पे like आपकी peace was maintained across the border. और this peace is very important because people living at border उनकी life hell हो जाती है इसकी वजह से. People die for no reason. People living at border उनके लिए life बहुत मुश्किल हो जाती है and on the both sides. So ceasefire is very important for the peaceful life for the people living at the border. But only until 2006 this ceasefire agreement was upheld by the both sides. But then and in 2006 that agreement जो कि कारगिल वॉर के बाद लिया गया था, वहाँ पे श्रीनगर, मुजफ्फराबाद और पूंछ-रावलकोट रूट भी खोल दिए गए थे बस सर्विस के लिए, सो दैट पीस कैन बी स्टैब्लिश और दोनों साइड की कश्मीर को कनेक्ट कर दिया जाए. उसके बाद काफ़ी वायलेंस वगैरह हुआ और ये रूट अभी इतना फ्लेक्सिबल नहीं है और इतना अवेलेबल नहीं है, बट देयर वाज अटेम्प्ट बाय द लीडर ऑन बोथ साइड की पीस स्टैब्लिश कर दी जाए. And for the development of the Kashmir, it is very important that peace should come to both the nation and both the countries should accept the present scenario and they should focus more about the Kashmiri people. But that is not happening right now. And now next, this is what we have understood what was LOC and what is like 2003 ceasefire agreement. Now let's go ahead in the international news. In the international news, ahead of summit with Putin, Biden backs the European allies. Now let's dig deep into this news. In this news, what is happening is Mr. Biden is going to Europe to attend the G7 and NATO summit. वो दो summit को meet करने जा रहे हैं, and he is also going to meet the Russian leader. Now this news isn't actually, this is a news because US and Russia do not have good they are not on good terms. They actually their relationship are in crisis and because of various reasons. पहला is hacking allegation. US and Russia puts hacking allegation on each other कि नॉट तो आपने हमारी साइट हैक की और वो बोलते कि आपने हमारी साइट हैक की. And US also alleges that there has been human right violation in the Russia, which Russia always denies. Second is US also blame Russia for meddling in its election. Like US says कि ट्रम्प की विक्ट्री तो बेसिकली रशिया की वजह से ही हुई थी because Russia meddled in the election. So because of which the relationship are not on good terms. But what we are like, हमारे लिए इसमें क्या है, हमें समझना है कि G7 क्या है और NATO क्या है. Now let's understand G7. Now G7 is group of 7 most advanced and wealthiest country. They are इतने filthy rich हैं कि they constitute 62% of the global net worth as per the IMF. They are one of the wealthiest country and that has become the parameter कि अपने आप को democratic मानते हैं और wealthy country हैं. इसमें कौन कौन आते हैं? Canada, US, UK, France, Germany, Italy and Japan. Like but 1975 में जब G7 establish हुआ था तो ये G7 नहीं था, तो ये G6 था. तब इसमें सिर्फ ये 6 countries हुआ करती थी. Like France, whether France hosted it, France, West Germany, Italy, Japan, UK and USA were part of it. In 1994, G7 was introduced. In 1997, Russia also became part of it. तो ये G8 हो गया था. जब रशिया इसका हिस्सा बन गया तो ये G8 हो गया था 1988 में. But then रशिया को 2004 में एक्सपेल कर दिया गया आफ्टर एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया. यूक्रेन के क्रीमिया को जब रशिया ने एनेक्स कर लिया था तो रशिया वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम द G8 ग्रुपिंग और ये वापस G7 बन गया. सो दिस इज द एंटायर हिस्ट्री ऑफ G7 कि कब बना था. 1975 में, 1994 में ये G7 बना, 1998 में ये G8 बन गया था, बट देन 2014 में अगेन G7 बन गया. रिसेंटली ये फिर न्यूज़ में था बिकॉज व्हेन डोनाल्ड ट्रम्प वाज द प्रेसिडेंट ही आस्क्ड कि इसमें इंडिया को भी इंक्लूड कर लो, चाइना को भी इंक्लूड कर लो, बट दैट डिड नॉट हैपन. लाइक G7 इज G7 राइट नाउ. ये आप थोड़ा सा याद रखें. नेक्स्ट इज नाटो. नाटो, सिंस नाटो वॉज इन न्यूज, नाटो के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि नाटो इज अ मिलिट्री अलायंस. यूजुअली पीटी में जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि पॉलिटिकल अलायंस है, इकोनॉमिक अलायंस है, यू कैन यूजुअली टिक द आंसर ओके दिस इज इकोनॉमिक this. But जब आप मिलिट्री देखते हो then you are very you are afraid, you are skeptic because UPSC does not ask question like this. This is like a little extreme statement and you're very and that time you're skeptical. But then military, NATO is a military alliance जो कि NATO Atlantic Treaty और Washington Treaty of 1949 में बनाई गई थी. Remember 1949 में बनाई गई थी. अब एक साथ आप डेट याद करने बैठेंगे ना, आपको नहीं याद रहेगा.
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि डेली डेली ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ लो। जैसे आज के करंट अफेयर्स में नाटो पढ़ लिया, इसकी डेट आज ही मेमोराइज कर ली, तो लास्ट में आपके लिए हज़ार्ड नहीं होगा, इसका क्वेश्चन भी सॉल्व करके देख लो, और गलत करोगे सही करोगे तो याद हो जाएगा। इसलिए इट वॉज फॉर्म्ड इन 1949 बाय द यूएस, Canada and several Western European nations to provide security against the USSR. Now, Article 5 states that if one member of the alliance is attacked, then it is considered as attack against the entire alliance. तो जब किसी एक पे अटैक होता है तो सारे एक हो जाते हैं। और अब तक ये प्रोविजन सिर्फ एक ही बार यूज हुआ था, कब? During the 9/11 attack on the US. At that time, all the US, like all the NATO countries, came together, and then this was only time जब इस आर्टिकल को यूज किया गया था। और अभी इसके 29 मेंबर स्टेट्स हैं, एंड मॉन्टेनेग्रो इज द मोस्ट रिसेंट लाइक एडिशन। मॉन्टेनेग्रो इसमें बहुत लाइक करंट एडिशन है जो कि इसमें काम कर रहा है। नाउ दिस, ऑन द बेसिस ऑफ दिस, जरा मुझे सवाल का जवाब दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट नाटो? आपको मुझे नॉट ट्रू स्टेटमेंट बतानी है, ट्रू नहीं बतानी। विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली? फर्स्ट, नाटो इज अ मिलिट्री अलायंस स्टैब्लिश इन 1947। अब मिलिट्री अलायंस वाला पार्ट तो हमने देख लिया कि मिलिट्री अलायंस तो ये है, बट इज इट फॉर्म्ड इन 1947? यूपीएससी डेट्स के साथ बहुत खेलती है। एंड देन वी सॉ, पीछे जाके हम देखेंगे तो ये तो 1949 में बनी थी, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अच्छा ठीक है, तो हमें पहले ही मिल गया, बट लाइक आर वी रियली श्योर? लेट्स गो अहेड, आगे बाकी को भी चेक कर लेते हैं सो दैट वी आर श्योर अबाउट योर आंसर। नेक्स्ट इज, इट वॉज स्टैब्लिश बाय वॉशिंगटन ट्रीटी। पीछे जाके देखें तो हाँ, वॉशिंगटन ट्रीटी से ही ये बना था, सो दिस स्टेटमेंट इज राइट। Now, अगर किसी एक state that if one member is attacked in Europe or North America, it is considered attack on all members. However extreme that statement is, it is actually true. And the last statement it says that कि it has 29 member states. अब ये तीनों statement तो ठीक है, तो इसका मतलब जो हमने पहला conclusion निकाला था कि statement 1 is wrong, which is right. That means that our answer A is right. So with that, we're done with our current today's international news. Thank you for staying with me. Thank you for bearing with me, and I hope our videos are helping you, because we are creating the videos to help you. Now, for your safety and for your health, stay at home, stay healthy, and stay connected to acubeias, because we provide you news in a in the most simplest manner.